जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो आ वीडियो जदि क्लियर अच्छी समस्त चैट सेक्शन मेसेज करो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। जदि ऑडियो गोटे मिनट क्लियर अच्छी समस्त चैट सेक्शन मेसेज करो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। समस्त जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ। जो मन को मो ऑडियो आ वीडियो क्लियर अच्छी समस्त चैट सेक्शन मेसेज करो सर ऑडियो एंड वीडियो। वो साउंड इको होची साउंड इको नहीं तो माइक टा टिके सकाळे इशू रहिला। वेरी गुड माइक टा इशू खराब काई चार्ज बाजू सरी गला हो आउ 2 दिन रहिला OHPC तमनकर एग्जामिनेशन आज आमे मॉक टेस्ट 3 को सॉल्यूशंस करिबा DT आउ TNE पाए मध्ये तमरो हेल्पफुल रहिछि। तमको मॉक टेस्ट केतेटा देछि ना 10टा मॉक टेस्ट मो प्रोवाइडेड करिछि। ए 10टा मॉक टेस्ट रु 100% तमरो वेटेज रहिबो। एटा 2025 आउ 2024 रो जो भी एग्जामिनेशंस हेछि तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मोठे की करिछि। निहाती भाबरे तमे सेटा अटेंड करिकि भलो भाबरे दियो निहाती स्कोर तमरो बूस्ट अप हो। डेरी न करे को सेशंस को स्टार्ट करिबा। जो मन को आंसर आसुची समस्त चैट सेक्शन में आंसर प्रोवाइडेड करो। क्वेश्चन नंबर 1 हाउ इज द बैंडविड्थ ऑफ ए ऑसिलोस्कोप इज स्पेसिफाइड। सर गोटे ऑसिलोस्कोप रे बैंडविड्थ रो फार्मूला कोन अछि। गोटे ऑसिलोस्कोप रे बैंडविड्थ रो फार्मूला एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन 2 bandwidth is equal to frequency into 5 bandwidth is equal to frequency into 5 गोटे प्रॉब्लम्स दउची समस्त मते चैट सेक्शन में आंसर दो। एग्जांपल मु कहली इन ए ऑसिलोस्कोप रे गोटे ऑसिलोस्कोप रे फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू देला 50 हर्ट्ज देन कैलकुलेट करो बैंडविड्थ केते। गोटे ऑसिलोस्कोप रे फ्रीक्वेंसी रो देला वैल्यू 50 हर्ट्ज देन कैलकुलेट करो बैंडविड्थ। बैंडविड्थ रो फार्मूला कोन सर फ्रीक्वेंसी इनटू 5 समस्ते एठु मु जानि जेबी ना तमे न्यूमेरिकल आसिले मधो अटेम्प्ट करि परियो। सर बैंडविड्थ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू 5 फ्रीक्वेंसी होची 50 इनटू 5 ता माने 5 5 25 250 हर्ट्ज को माने कर 250 हर्ट्ज बाहरिला। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर वेल डन। ए टाइप रो जोश रहिबा दरकार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर हाउ मच वोल्टेज आर हाई टेंशन केबल इज यूज्ड। सर को केबल ना हाई टेंशन केबल को केबल ना हाई टेंशन केबल ले केते वोल्टेज है तार रेंज अछि हाई टेंशन केबल। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर 2 1.1 केवी रु 11 केवी पर्यंत एचटी केबल रो रेंज केते ना 1.1 केवी रु 11 केवी पर्यंत। क्वेश्चन नंबर 3 where is the biomass is born to produce high pressure tip। पचरची एमानक मध्यरे को कंपोनेंट रे हमर स्टीम प्रोड्यूस होची हाई प्रेशर रे। एमानक मध्यरु को कंपोनेंट रे कोन प्रोड्यूस होची ना स्टीम प्रोड्यूस होची हाई प्रेशर रे।
एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 3 बॉयलर रे हमर कोन प्रोड्यूस हुए सर बॉयलर रे हमर स्टीम प्रोड्यूस है बॉयलर रे कोन प्रोड्यूस हुए स्टीम प्रोड्यूस क्वेश्चन नंबर 4 which of the following also called insulated gate FET एमानक मध्यरु काहाकू insulated gate FET कुआ जाउछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर 4 मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी को अन्य नाम कुहा जाउछि इंसुलेटेड गेट एफईटी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोली कुहा जाउछि क्वेश्चन नंबर 5 Why do capacitor start induction run motor have high starting surge? सर गोटे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर रे हाई स्टार्टिंग टॉर्क थाए तार कारण कोन पाई गोटे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर रे हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन 3 बिकॉज़ देयर फेज एंगल इज वेरी हाई सेमानक भितरे फेज स्लिप बहुत अधिक थिबार सेमानक भितरे फेज स्पीड बहुत अधिक थिबारु तमानकर स्टार्टिंग टॉर्क अधिक हाई थाए जो माने क्वेश्चन नंबर 1 रु क्वेश्चन नंबर 5 भितर जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने क्लियर हेलो समस्त चार्ट सेक्शन ने यस लेखो देखो सब बेले तुमको मोटिवेशन कहूची कोन इफ यू कैन ड्रीम इट जदि तमे स्वप्न देखुचो मन रखिबो यू कैन सब बेले अचीव इट जे पर्यंत तमे जॉब पाइन से पर्यंत तमरो सर्टिफिकेट रो कोनोसी वैल्यू नै माने सर्टिफिकेट ता गोटे कागज जो दिन तमे जॉब पाई जीवो से कागज रो वैल्यू रहबो जे पर्यंत तमे जॉब करिनो सेते पर्यंत तमर मन रखिबो सर्टिफिकेट रो वैल्यू कागज जो दिन जॉब करि नै जीवो सेते बेले कोन से सर्टिफिकेट कागज रु कन्वर्ट हे जीवो कोन मनी रे सब बेले मन रखिबो स्वप्न देखिबो एवं ताको अचीव करबा को सब बेले ट्राई करिबो क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ एन अल्टरनेटर ऑन लोड सर गोटे अल्टरनेटर रो ऑन लोड कंडीशन ने सिंक्रोनस रिएक्टेंस रो वैल्यू केमिति पाइबा गोटे अल्टरनेटर रो लोड कंडीशन ने सिंक्रोनस रिएक्टेंस रो फॉर्मूला एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन 4 वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्टियस रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्टेंस कोन कहिला ये जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस रो फार्मूला कोन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्टियस रिएक्टेंस एंड आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस रो प्रोडक्ट टाको मु कोन कहूची ना सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोली कहूची क्वेश्चन नंबर 7 What does PN junction breakdown voltage depends upon? सर ये जो PN junction अछि एटा P एटा N ए PN junction ने ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज ता काहा ऊपर डिपेंड करूछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 width of a deflection region सर डिफ्लेक्शन रीजन न एटा जो डिफ्लेक्शन रीजन न विड्थ ऊपर डिपेंड करिवो विड्थ जति अधिक रहिबो तबेले अधिक ब्रेकडाउन वोल्टेज दरकार विड्थ जति कम रहिबो तबेले कम ब्रेकडाउन वोल्टेज दरकार क्वेश्चन नंबर 8 हाउ इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड इन सीरीज RLC AC सर्किट सर गोटे सीरीज RLC AC सर्किट रे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला कोन अछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर 4 सर f0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट fc जदि सेठी आउ जगह रे क्वालिटी फैक्टर पचारे 1 बाय r अंडर रूट l अपॉन c जदि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पचारे 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट lc ए डेटा फार्मूला तमरो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे रिपीटेशन होछि क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन नंबर 9
What is connected to the fan motor to change the frequency and control of the fan speed? Sir, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କନେକ୍ଟେଡ କରିକିରି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ ମୋଟରର ମୋ ସ୍ପିଡଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବି? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କନେକ୍ଟ କରିକି? ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର କରେକ୍ଟ आंसर ऑप्शन 1 फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर को सर मु कनेक्टेड करिकी काहाकू फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर को कनेक्टेड करिकी कारण ns इज इक्वल टू 120f डिवाइडेड बाय p सिंक्रोनस स्पीड टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी सर ए फ्रीक्वेंसी को इन्वर्टर करिकी मु कोन करी स्पीड कंट्रोल करि पारि। क्वेश्चन नंबर 10 why are the circular cylindrical coil used in most of the core type transformer? सर गोटे कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर रे आमे जो सिलिंड्रिकल कॉइल व्यवहार करूछु तार मेन कारण कोन को कारण पाई आमे कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर रे सिलिंड्रिकल कॉइल व्यवहार करूछु? एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन ए because they are mechanical strength कोन मेकानिकल स्ट्रेंथ ताकर कोन ना अधिक थाए। मन रखिबो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर रे सिलिंड्रिकल वाइंडिंग, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर रे सैंडविच टाइप वाइंडिंग, सीसी आउ एसएस। सीसी माने कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर रे सिलिंड्रिकल वाइंडिंग, एसएस माने सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर रे सैंडविच टाइप वाइंडिंग व्यवहार करा। ए जो क्वेश्चन नंबर 6 रु 10 जाए जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चैट सेक्शन में यस लेखो सर मु क्लियर। केही भी साइलेंट रोहनी, समस्तंगर रेस्पॉन्स नै कि आमे आगु को जिबा भलो भाबरे डिस्कशंस करि के क्वेश्चन सेट को वाइंड अप करिबा। समस्त मैसेज करो। क्वेश्चन नंबर 11 What is the ratio of small change in input to small change in output is called as? Sir, जो input divided by output माने small change in input divided by small change in output को हमें कौन कहूँ? एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट कौन कहूची? ये इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट काहा को कहिबा ना इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट होची कौन रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन इनपुट डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन आउटपुट रो रेशियो टा को हमें कौन इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट कहूची। क्वेश्चन नंबर 12 What does the width of a deflection region in PN junction diode depends on? कौन कहिला सर ये जो PN junction diode अछि ये जो deflection width ता कहा ऊपर डिपेंड करूची? एक्सीलेंट, समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 1 डोपिंग लेवल कौन कहिला? PN मैसेज करो केही भी वॉइस राइज करो ना साउंड होची मैसेज करो गोटे पीएन जंक्शन डायोड रे तार जो ए डोपिंग लेवल ता डिफ्लेक्शन रीजन ता कहा ऊपर डिपेंड करूची ना डोपिंग लेवल ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्क इन इंडिया मस्ट बी अकॉर्डिंग टू व्हाट? जेतक जाकरे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन काम होची को इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अनुसार काम होची। एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 1956 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल केते 1956। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग unit positive charge from the point of a lower potential of the point higher potential electric field is called? कौन कहिला सर वर्क डन मूवी गोटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज गोटे पॉइंट रो अन्य एक पॉइंट को जेबा पई कौन कहै छै? एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर अछि सर ऑप्शन 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट।
जे पचारिबो पोटेंशियल डिफरेंस कौन ना पोटेंशियल डिफरेंस होची हायर पोटेंशियल माइनर लोअर पोटेंशियल डिफरेंस टाको आमे कौन कहूची ना पोटेंशियल डिफरेंस बोली कहूची। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट among the following does extended feeder length lead to the कौन कहला एमानक मध्यरु आमे जदि फीडर लेंथ को एक्सटेंडेड करि दबा कौन हो एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हाई लाइन लॉस हबो कौन हाई प्रमाउंट रो लाइन लॉस हबो। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 रु 15 भितर जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चार्ट सेक्शन यस करो सर ये पांचटा क्वेश्चंस क्लियर अछि वेरी गुड। आज जो मॉक टेस्ट 3 रो क्वेश्चन पैटर्न केमिति अछि इजी अछि 2 रे मॉडरेट अछि 3 रे हार्ड अछि। Which among the following extended feeder length जो feeder length हमर ट्रांसमिशन लाइन ने तीनटा जिनस फीडर डिस्ट्रीब्यूटर आउ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ने सर्विसमैन ये जो फीडर लेंथ को आमे एक्सटेंडेड करूचे लेंथ बढ़िला माने कोन ट्रांसमिशन लाइन न कोन हबो रेजिस्टेंस बढ़िबो रेजिस्टेंस बढ़िले करंट कमिबो करंट कमिले लॉस कमिबोनी कारण आमे जानि छे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ लेंथ बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़िबो रेजिस्टेंस बढ़िले करंट कमिले लॉस कमिबो। केमिति क्वेश्चंस अछि क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट हैपन माने कोन घटुची टू द फील्ड स्ट्रेंथ एज ए डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेस सर गोटे कंडक्टर रो जदी डिस्टेंस बढ़ी जाउची तेबे हेले तारो फील्ड स्ट्रेंथ रो वैल्यू कोन रहिबो गोटे कंडक्टर रे जदी डिस्टेंस बढ़ी जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कौन द फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस गोटे कंडक्टर रो डिस्टेंस बढ़ी गले तार फील्ड स्ट्रेंथ कौन हो ना कमी जीवो। क्वेश्चन नंबर 17 इन व्हिच द फॉलोइंग एस्टिमेट बेस्ड ऑन एक्यूरेसी द प्रोजेक्टेड मस्ट बी डिफाइन अराउंड 0 to 5% कौन कहला जेतेबेले एस्टिमेट आमे कैलकुलेशन करि थाउ गोटे प्रोजेक्ट तार एक्यूरेसी केते जो 0.5 अराउंड होता है तो कौन को जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर 3 ताको कौन ना प्रिलिमिनरी को जाउची कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट जो कैलकुलेशन करा जाउची गोटे प्रोजेक्ट ताको प्रथमे कौन को जाउची ना प्रिलिमिनरी बोली को जाउची। क्वेश्चन नंबर 18 which transformer is used to supply distribution circuit having no motor connected to पचारुची एमानक मध्यरु को ट्रांसफार्मर रे सप्लाई कनेक्ट करा जाउची डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लाइटिंग ट्रांसफार्मर ए लाइटिंग ट्रांसफार्मर रे आमे डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट को कनेक्ट करिता जो थिरे कि कोनोसी प्रकार मोटर कनेक्टेड रुहे नै। क्वेश्चन नंबर 19 इन RLC सर्किट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपेडेंस एट ए रेजोनेंस सर गोटे RLC सर्किट रे रेजोनेंस समय रे इंपेडेंस रो वैल्यू RL आउ C RLC कारण LC कटि जीवो ता माने कोन ऑप्शन 1 खाली R रहिबो। क्वेश्चन नंबर 20 फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर फ्रैक्शनल हॉर्स पावर सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड एमानक मध्यरु फ्रैक्शनल हॉर्स पावर सिंक्रोनस मोटर को जगह रे व्यवहार करा जाउची एमानक मध्यरु फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर को जगह रे व्यवहार करा जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पावरिंग
क्लॉक एंड टाइमिंग डिवाइस क्लॉक आउ टाइमिंग डिवाइस रे फ्रैक्शनल हॉर्स पावर सिंक्रोनस मोटर व्यवहार करा ये जो क्वेश्चन नंबर 16 रु 20 भितर जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन करली जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चैट सेक्शन में मेसेज करो सर क्लियर हो पांच पांच पैटर्न करिछि देमिति तुमको रिवीजन करिया को कोन बहुत बेस्ट हो तुमको कहूची मॉक टेस्ट केतुटा देइछि ए भलिया ना 10टा देइछि देखिबा काले दी तीनटा जदी अब टाइप कर देबी मिनिमम टार्गेट रखितली 15टा जदि जो माने ए मॉक टेस्ट कंप्लीट करि दउछ मो 100% कहूची से बेटर स्कोर करी लेटेस्ट क्वेश्चन एमिति फॉर्मेट रे होउची क्वेश्चन नंबर 21 which of the following have small but positive relative permeability एमानक मध्यरु को मटेरियल पॉजिटिव रिलेटिव परमेबिलिटी रो वैल्यू पॉजिटिव को मटेरियल एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मटेरियल ना ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल रिलेटिव परमेबिलिटी रो वैल्यू कोन पॉजिटिव क्वेश्चन नंबर 22 why are synchronous phase modifier is installed in a synchronous substation कौन कहिला एमानक मध्यरु synchronous phase modifier टा को जगह रे इंस्टॉलेशन करा जाउची ना synchronous substation में कौन पाई आमे synchronous phase modifier को व्यवहार करू एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन बी टू इम्प्रूव पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम सर गोटे सिस्टम रो पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करिबा पाई मो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर जे पचारिबो सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर रो काम कोन सर पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करिबा क्वेश्चन नंबर 23 what is the role of a unshaded winding in a shaded pole motor sir गोटे shaded pole motor रो unshaded winding रो काम कोन कोन पाई आमे unshaded winding व्यवहार करूछु गोटे shaded pole motor एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्रिएट ए लोअर स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड लोअर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट करिबा पाई गोटे शैडेड पोल मोटर रे अनशैडेड वाइंडिंग करा जाउछि क्वेश्चन नंबर 24 if p is the number of pole n is the rotational speed frequency including emf and alternator represent frequency रो फार्मूला कोन सर n is equal to 120 f divided by p तापर f is equal to n into p divided by 120 तेणु करी समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 25 द एडमिटेंस ऑफ ए पैरेलल एसी सर्किट इज डिफाइंड एज एडमिटेंस कहले कोन बुझुछ एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सर रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस माने y is equal to 1 by z इंपेडेंस रो रेसिप्रोकल टा को मो सब बेले कम कोहे एडमिटेंस आ गोटे कोन ससेप्टेंस ससेप्टेंस कोन ना रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस होची ससेप्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस होची एडमिटेंस ए जो क्वेश्चन नंबर 21 रो 25 भितरे जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन करिली जो माने क्लियर हैला समस्त चैट सेक्शन में यस लेखो सर क्लियर बोली क्वेश्चन नंबर 26 how is the total admittance calculated while applying admittance method in parallel एडमिटेंस रो फार्मूला कोन y रो फार्मूला कोन गोटे पैरेलल सर्किट एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन y इज इक्वल टू
अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y इज इक्वल टू कौन जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रो रूट ओवर जेमिति तमे z इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कहउथिलो एटा कोन सीरीज सर्किट रे इंपेडेंस कैलकुलेशन रो सेही भलिया भाई पैरेलल सर्किट रे एडमिटेंस कैलकुलेशन रो फार्मूला कोन y इज इक्वल टू कोन g स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर क्वेश्चन नंबर 27 What is direction of magnetic lines of inside the magnet? सर गोटे मैग्नेट भितर दीटा पोल इनसाइड रे जो मैग्नेटिक फ्लक्स को डायरेक्शन फ्लो होता एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल गोटे मैग्नेट रे जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स सब बेले साउथ टू नॉर्थ इनसाइड रे आउ एमिति नॉर्थ टू साउथ कोन ना आउटसाइड रे फ्लो होते क्वेश्चन नंबर 28 when a delta star connection mainly used कौन कहिला ए डेल्टा स्टार कनेक्शन को जगह रे व्यवहार करा जाउ एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 step of transformer at the beginning of a transmission line step of transformer रे को कनेक्शन ना डेल्टा स्टार कनेक्शन ये स्टार कौन पे सेकेंडरी वाइंडिंग रे हाई वोल्टेज पाइबा पाई गोटे ट्रांसमिशन लाइन रो बिगिनिंग रे स्टार्टिंग रे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर व्यवहार करा जाय जहा को प्रकार कनेक्शन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर ता ना डेल्टा स्टार कनेक्शन दिया जाय क्वेश्चन नंबर 29 which of the following can be applied only linear network सर एमानक मध्यरु को थ्योरम ता एमिति अछि जे केवल वन एंड ओनली लिनियर नेटवर्क रे व्यवहार हे परिबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 सर ए सुपरपोजिशन थ्योरम को थ्योरम सुपरपोजिशन थ्योरम ता केवल लिनियर नेटवर्क रे व्यवहार ए सुपरपोजिशन थ्योरम रे पावर को कैलकुलेशन करा जाय नाही सुपरपोजिशन थ्योरम रे पावर को कैलकुलेशन करा जाय नाही क्वेश्चन नंबर 30 how can the result in a circuit current is vector method of a solving parallel circuit to be found एमानक मध्यरु सर को वेक्टर मेथड को आमे व्यवहार करिकि गोटे पैरेलल सर्किट को फाइंड आउट करि रिजल्टेंट एमानक मध्यरु को वेक्टर मेथड एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स पैरेललोग्राम लॉ को व्यवहार करिकरी गोटे पैरेलल सर्किट को हम सब बड़े सॉल्यूशंस करता ए जो क्वेश्चन नंबर 26 रु 30 भितरे जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चार्ट सेक्शन में यस लेखो सर क्लियर हो क्वेश्चन नंबर 31 which of the following magnetic material have relative permeability slightly less than 1 पचारुची एमानक मध्यरु को मटेरियल रिलेटिव परमिएबिलिटी रो वैल्यू लेस देन 1 एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन नंबर 2 कोन ना डायोमैग्नेटिक मटेरियल ए डायोमैग्नेटिक मटेरियल रो वैल्यू कोन ना लेस देन 1 पैरामैग्नेटिक मटेरियल ग्रेटर देन 1 आ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल 500 रु 1000 बहुत वैल्यू हाई क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट डज टर्मिनल वोल्टेज बी इन एन अल्टरनेटर वेरी विथ सर गोटे अल्टरनेटर ए जो टर्मिनल वोल्टेज रो कहा को नै की वेरी करे गोटे अल्टरनेटर रो टर्मिनल वोल्टेज कहा को नै की वेरी करे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 सर लोड आ पावर फैक्टर को नै की गोटे अल्टरनेटर रो टर्मिनल वोल्टेज दीटा जिंस को नै की सर वेरी करे गोटे होची लोड आ गोटे होची सर पावर फैक्टर क्वेश्चन नंबर 33 which type of magnetic material are used making permanent magnet
सर एमानक मध्यरु को मैग्नेटिक मटेरियल को नेकी गोटे परमानेंट मैग्नेट तैयारी करि परिबी। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची कोन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन ए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सर ए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को नेकी मो गोटे परमानेंट मैग्नेट एग्जांपल कोन अल्निको। क्वेश्चन नंबर 34 which of the following is an emission from biomass combustion of a biopower plant। एमानक मध्यरु काहाको नेकी गोटे बायो पावर प्लांट तैयार करा जाउची काहाको कम्ब्यूशन करिकी काहाको जळैकी एमानक मध्यरु गोटे बायो पावर प्लांट तैयार करा जाउची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 सल्फर डाइऑक्साइड। सर सल्फर डाइऑक्साइड को कम्ब्यूशन करिकी मिथेन ना सल्फर डाइऑक्साइड को कम्ब्यूशन करिकी आमे कोन करूचो ना बायो पावर प्लांट तैयार करूचो। क्वेश्चन नंबर 35 which of the following approaches to of estimated focus on identifying cost of the material equipment and labor। एमानक मध्यरु सर को एस्टिमेट रे आमे सब बळे फोकस करि थाउ मटेरियल इक्विपमेंट एंड लेबर ऊपर को एस्टिमेट। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यूनिटी प्राइस एस्टिमेट को एस्टिमेट यूनिटी प्राइस। ये जो क्वेश्चन नंबर 31 रु 35 भितरे जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन करिलु जो माने भी क्लियर हैला समस्त चैट सेक्शन में यस लिखो। क्वेश्चन नंबर 36 which of the following is an example of null deflection instrument। एमानक मध्यरु को गोटाक सारे null deflection instrument रो एग्जांपल। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर बी सर पोटेंशियोमीटर। ए पोटेंशियोमीटर टा कोन गोटे नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट रो एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 37 which of the following passive component एमानक मध्यरु को गोटाक सारे पैसिव कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट माने जे एनर्जी कंज्यूम करिवो। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सर ए रेजिस्टर टा को मु कोन कहूची गोटे पैसिव कंपोनेंट बोली कहूची। क्वेश्चन नंबर 38 इन व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग टू द इलेक्ट्रोड यूज्ड मस्ट बी द सेम मटेरियल वर्कपीस टू बी वेल्डेड। एमानक मध्यरु को आर्क वेल्डिंग रे आमे कोन करा जाउची इलेक्ट्रोड यूज करा जाउची सेम मेटल वर्कपीस को वेल्ड करिया पाई। एक्सीलेंट से मान को कहा जाउची ऑप्शन 1 मेटल आर्क वेल्डिंग बोल। ए मेटल वर्क वेल्डिंग रे सेम मेटल वर्कपीस को आमे वेल्डिंग करिथा। क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट इज द मॉडल व्हिच टेक इनटू अकाउंट यूनिफॉर्म सीरीज of a year and payment called। एमानक मध्यरु को मॉडलटा एमानक मध्यरु को मॉडल ले आमे कोन यूनिफॉर्म सीरीज ईयर और पेमेंट डिटेल टा कलेक्शन करछु। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर 4 यूनिफॉर्म सीरीज कंपाउंड अमाउंट मॉडल। क्वेश्चन नंबर 40 what is the condition in which grid internationally or accidentally disconnected from the distribution system but the distribution system continue to feed local load। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर डी इसलैंडिंग। ए इसलैंडिंग कोन करूची इंटरकनेक्शन करूची आ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जेतबे डिस्कनेक्ट होची से लोड को फीड करि पाए। ये जो क्वेश्चन नंबर 36 रु 40 भितरे जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहार सब क्लियर हैला सब चार्ट सेक्शन समस्त क्लियर था। ये 40 टा क्वेश्चन जो डिस्कशन कली कहार केतटा क्वेश्चन ठीक हैला समस्त मते चार्ट सेक्शन में मैसेज कलो।
केही भी साइलेंट रहिबनी समस्त निज निजर स्कोर मेंशन करियो सर मोर ए 40 टा क्वेश्चन नो भाई देखो जॉब पाइबा पाई सब बेले फैक्ट जिनस कौन जानिछ गोटे जिनस को माने जॉब पांती तुमको जो जिनस मन रखुथिबा आसुची तमे सेही जिनस करिदबो स्टेप 1 जो जिनस आसुची सेही जिनस करिदबो आ जो जिनस आसुनी तमे ताको नेग्लेक्ट मारिकी छाड़ी दउछ अरे भाई नेग्लेक्ट मारिकी छाड़िले सब बेले सेही जिनस ही तमनकर परीक्षा रे सब बेले पड़ी जाय ता फଳରେ ତମେ ଚାକିରି ପାଇବନି ତମକୁ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ଏନି ହାଉ ତମମାନେ କଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବାଇ ଦ ଫୋର୍ସଲି ତମେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ତେବେ ହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କୁ achieve କରିପାରିବ ତମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କିପ୍ ମାରୁଥିବ ତମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲେକ୍ସନ ରୁ ସବୁବେଳେ ରହି ଯାଉଥିବ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜିନିଷ କାରଣ ତମକୁ ଜବ୍ ପାଇବା ଦରକାର जोटा आसुची सेटा भल भाव में ठीक कर जोटा न आसुची एडजस्टमेंटली मन रखी आमे भितर रखा पड़ो कारण जेहेतु सिलेक्शन करने आमको क्वेश्चन जदि मत इजी क्वेश्चन आसो मु तुमको खाली इजी क्वेश्चन फॉर्मेशन कर दे तुम सब ठीक ठीक मारिक चलो तेरे कौन प्रकार तुम इम्प्रूवमेंट हम ना तेणुक कौन एडु सेडु क्वेश्चन को कलेक्ट करुच्ची जहाँ फल कौन लेटेस्ट क्वेश्चन को यहाँ हूँ फैक्ट यही टाइप री क्वेश्चन पड़ो जे तुम से अचीवमेंट करें तेल जॉब पाइपर ना जी मॉक टेस्ट देती आज 10टा की पीडीएफ सबुतक क्वेश्चन को तुम मैंने सॉल्यूशन कर निहाती भाव में मो मन कहूँ ना बेटर तुम स्कोर कर कारण बहुत भावी चिंतिक मो डिजाइन लास्ट मोमेंट तुम कर समय देकी राति अनिद्रा क्वेश्चन नंबर 41 इन केस ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड what does the power develop in a heating circuit depends upon कौन कहला in case of a resistance heating method the power of developed मु देखिनी आज एडमिट कार्ड टा देखिदेबी एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू द सर्किट कौन कहला गोटे रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड रे केते करंट फ्लो करिवो ना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जति कि हीट प्रोड्यूस करना हीट इज इक्वल टू हमरो I स्क्वायर RT डिक्लेरेशन फॉर तुम नै कि जे पीडब्ल्यू रो मु देखि देबी ठीक देखिनी तो क्वेश्चन नंबर 42 How is the efficiency of a short transmission line calculated? Sir, what a short transmission line ने efficiency आमर केमिति calculation करा जाउछि? Excellent. समस्तंकर correct answer option number 4. Power delivered divided by power supplied into 100. Power delivered divided by power supplied into 100. What is short transmission line efficiency formula कौन power deliver divided by power supply into 100. Question number 43 how is the induced EMF represent if a conductor A of a length L angle theta direction of flux density पचारुची सबुतक डाटा देइछि EMF induce रो फार्मूला कौन E is equal to Excellent. समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 2 E is equal to BLB sin theta. E is equal to BLB sin theta. Question number 44. Which are three standard color code in the three phase phasor diagram? Three phase रे जो तीनटा स्टैंडर्ड कलर अछि कोन कोन से कलर अछि मते कुओ Excellent. समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 थ्री फेज रे R Y B रेड येलो और ब्लू क्वेश्चन नंबर 45 Why are the earthing system provided in a substation सर हम सबस्टेशन मान करे
आमे जो अर्थिंग सिस्टम प्रोवाइडेड करूछु कोन पाए एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 टू प्रोवाइड ए डिस्चार्ज पाथ फॉर लाइटनिंग गैप ये कौन करूची ना डिस्चार्ज पाथ प्रोवाइडेड करूची लाइटनिंग ये जो क्वेश्चन नंबर 41 रु 45 भितरे जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चैट सेक्शन मेसेज करो सर क्लियर बोली क्वेश्चन नंबर 46 हाउ इज द एडी करंट लॉस इज मिनिमाइज इन ए ट्रांसफार्मर सर गोटे ट्रांसफार्मर रे एडी करंट लॉस को हमें केमिति मिनिमाइज करि परिबा एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन 4 लैमिनेटिंग द कोर सर ट्रांसफार्मर कोर को हमें लैमिनेशन करिकी तार एडी करंट लॉस को रिड्यूस करि परिबा क्वेश्चन नंबर 47 in a brushless DC motor where are the permanent magnet is attached पचारुची सर गोटे ब्रशलेस डीसी मोटर रे परमानेंट मैग्नेट टाको आमे केमिति अटैच करूची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गोटे ब्रशलेस डीसी मोटर रे गोटे ब्रशलेस डीसी मोटर रे रोटर रे आमे कोन करूची ना परमानेंट मैग्नेट को अटैच करूची क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट इज द इनर सरफेस ऑफ ए सर्कुलर फर्नेस इन डायरेक्ट आर्क हीटिंग कोटेड विथ एमान को मध्यरु को जगह रे को टाइप रो मटेरियल बा को जगह रो इनर सरफेस रे हमें डाइलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग को कोटेड करूची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर 4 रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 49 व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर फ्लक्स डेंसिटी ए फ्लक्स डेंसिटी रो मेजर करिबा पई यूनिट कोन फ्लक्स डेंसिटी रो यूनिट कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 सर वेबर पर मीटर स्क्वायर ताको भी कहउचंती कोन ना टेस्ला क्वेश्चन नंबर 85 व्हाट इज द proposal of an electrical estimating company submitted in response to request for information regarding an upcoming electrical project गोटे जेतक प्रकार सर अपकमिंग इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट आसुची जो हमें एस्टिमेट करूछु कंपनी सबमिट करिया पय ताको कोन कहूछु एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ताको टेंडर बोली कहूछु जे कोनसी मु इलेक्ट्रिकल काम नेबी ताको कोन जो टेंडर अप्लाई करछुंदी बोली कुआ जाउची एक क्वेश्चन नंबर 46 रु 50 भितरे जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कले जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चैट सेक्शन में यस लिखो सर क्लियर बोली क्वेश्चन नंबर 51 हाउ कैन सोलर एनर्जी बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर एमान को मध्यरु को प्रोसेस रे गोटे सोलर एनर्जी को मो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करि परबी को प्रोसेस रे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 सर ए फोटोवोल्टिक प्रोसेस रे मो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करि परबी क्वेश्चन नंबर 52 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी सर एमान को मध्यरु को कंपोनेंट अछि जे हीट एनर्जी रु इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करि परिबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सर ए टरबाइन एटा कोन करि परिबो ना हीट एनर्जी रु इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करि परिबो क्वेश्चन नंबर 53 when the mechanical power developed by a motor is maximum पचारुची गोटे मोटर टा केते बेले से मैक्सिमम पावर डेवलपमेंट करिवो
Excellent. समस्तंकर correct answer option 3. Back EMF is half of the supply voltage. Very important question. Our most repeated question कौन? Maximum power condition ने back EMF ର value सब बेले half of the supply voltage हुए. Question number 54. Which of the following also known as mechanical characteristic of a DC motor? एमानक मध्यरु को कैरेक्टरिस्टिक टा मेकानिकल कैरेक्टरिस्टिक अछि डीसी मोटर. एक्सीलेंट. समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 1. सर स्पीड वर्सेस टॉर्क रो कैरेक्टरिस्टिक कोन मेकानिकल. कारण गोटे मोटर रो कोन इनपुट आउटपुट आउटपुट रे इलेक्ट्रिकल आउटपुट रे मैकेनिकल माने कोन टॉर्क और स्पीड सबले मन रखियो. Question number 55. What is the purpose of a transposition of a overhead conductor? Sir, overhead conductor को मु transposition करिवार main purpose कोन को उद्देश्य रे मु overhead conductor को transposition करू. Excellent. समस्तंकर correct answer option 3. Balance the capacitance of the line. Capacitance line को balance करिया पाई moments. ये जो क्वेश्चन नंबर 51 रु 55 भितरे जो पांचटा क्वेश्चन देली जो माने भी क्लियर हेला समस्त चार्ट सेक्शन ने ये सिलेक्ट सर क्लियर बोल. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 56. While applying superposition theorem, सर मु जते बेले गोटे superposition theorem को apply करूची, what is done while removing the voltage source? सेते बेले मु voltage source को केमिति remove करि पारुची. Excellent. समस्तंकर correct answer सर option 4. सर voltage source को मु short circuit करूची. Their internal voltage source को शॉर्ट सर्किट आ करंट सोर्स को सर मो ओपन सर्किट करूची. जते बेले मो सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करूची सेते बेले कोन वोल्टेज सोर्स शॉर्ट करंट सोर्स. क्वेश्चन नंबर 57. when the generator is said to be good voltage regulation पचारुची गोटे जनरेटर केते बेले से भलो वोल्टेज रेगुलेशन को अचीव करि पारुची. Excellent. समस्तंकर correct answer option number 4. When change in voltage between no load to full load small रहइबो जते बेले no load voltage और full load voltage रो वेरिएशन बहुत स्मॉल हबो सेते बेले गोटे जनरेटर रो वोल्टेज रेगुलेशन तमे गुड बोली जानि पारि. क्वेश्चन नंबर 58. What is type of generator that used to generate a sinusoidal output whose frequency is automatically varied? एमानक मध्यरु को जनरेटर रे जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली वेरी करूची. एक्सीलेंट. समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2. स्वीप फ्रीक्वेंसी जनरेटर. सर ए स्वीप फ्रीक्वेंसी जनरेटर रे कोन करूची ना ऑटोमेटिकली वेरी करूची. क्वेश्चन नंबर 59. In electronic signaling, a complete wave cycle, how many radian of a phase? गोटे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग रे जो वेव रे कंप्लीटली साइकिल होची केते रेडियन पर फेज. एक्सीलेंट. समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 1. 2 पाई. कंप्लीट साइकिल में 2. क्वेश्चन नंबर 60. How is the cost of labor calculated? आमे लेबर कॉस्ट को केमिति कैलकुलेटेड करूचे लेबर कॉस्ट. एक्सीलेंट. समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2. रेट ऑफ लेबर पर डे इनटू नंबर ऑफ डे कंप्लीट वर्क पर डे हिसाब रे लेबर माने केते पैसा नउछंती आ केते गोटे कामटा कंप्लीट करिया को केते दिन नउछन. ये जो क्वेश्चन नंबर 56 रु 60 भितरे जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हैला समस्त चार्ट सेक्शन में ये सिलेक्ट सर क्लियर हो.
क्वेश्चन नंबर 61 in a detailed estimate provision for contingency typical ranging from ଯେତେବେଳେ ତମେ contingency କରୁଛ ଗୋଟେ detail estimate କେତେ परसेंट ଧରିକି excellent ସମସ୍ତଙ୍କର correct answer option 1 ସାरे 3 ରୁ 5% ଧରିକି ମୁଁ calculation ସବୁବେଳେ କରୁଛି question number 62 What is interturn fault in a alternator? सर गोटे alternator रे interturn fault कहले काहाकू interturn fault कहउछ गोटे alternator रे काहाकू तमाने interturn fault बोली कहउछ excellent समस्तंगर correct answer option 4 सर short circuit between two turn for same winding short circuit between two turn for same winding को हमें कौन कहउछे ना interturn fault बोली कहउछे question number 63 which of the following not usually included in a tender document एमानक मध्यरु काहाकू include करा जाउ नै गोटे tender document पय excellent समस्तंकर correct answer option A सर ए फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को टेंडर डॉक्यूमेंट पाए इंक्लूड करा जाउ नाही क्वेश्चन नंबर 64 बेस्ड ऑन फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्ट करो करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट 1 कोन कहूची सर टोटल इंडक्टेंस इन सीरीज ऑपोजिशन configuration can never be greater than the inductance of the largest coil statement 2 कहूची in series opposing inductance of each coil were against to the other reducing the total end को स्टेटमेंट ठीक हो बोली पछाची excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सर बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट अछि माने कोन सर L equivalent is equal to L1 plus L2 plus 2M एटा सीरीज opposing पाई आउ L equivalent is equal to L1 plus L2 minus 2M एटा कोन ना सीरीज एटा एडिंग पाई एटा सीरीज opposing पानी माने दीटा इंडक्टर अछि जदि सेम पोलैरिटी थिबो तेबेले एडिशन करा जिवो फ्लक्स कोन अब टोटल नेट इंडक्टेंस इंक्रीज हो जदि एमती अपोजिट पोलैरिटी थिबो माने ये एंट्री कलाल को एग्जिट करूची तेबेले इंडक्टेंस तमरा कमी जाय क्वेश्चन नंबर 65 What component of a wind power plant increases the rotational speed of the rotor level suitable for electricity generation एमानक मध्यरु को कंपोनेंट ता wind power plant रो इंक्रीज करूची रोटेशनल स्पीड बोल एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कौन सर गियर बॉक्स ये जो क्वेश्चन नंबर 61 रु 65 भितरे जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हला समस्त चार सेक्शन में यस लेखो सर क्लियर बोली वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 66 If a voltage phasor V is equal to 100 angle 0 and current phasor I is equal to 10 angle 45, what is the power factor? Power factor cos phi केते? ये दीटा 0 और 45 डिग्री VI cos phi ना केते रहइबो? Excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 सर cos 45 डिग्री कोन हबो? लीडिंग हो cos 45 डिग्री कोन हबो ना लीडिंग हो क्वेश्चन नंबर 67 द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए डीसी जनरेटर इज कनेक्टेड इन गोटे डीसी जनरेटर रे आर्मेचर वाइंडिंग ता केमिति कनेक्टेड होय एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सीरीज गोटे डीसी जनरेटर रे आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज आउ फील्ड वाइंडिंग ता पैरेलल गोटे डीसी जनरेटर रे आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज और फील्ड वाइंडिंग सारे पैरेलल क्वेश्चन नंबर 68
The efficiency of a power transformer under maximum power transfer condition. गोटे पावर ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी केते मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन. एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 50% केते रुहे 100% नाही बे 50% मैक्सिमम पावर रे ट्रांसफर कंडीशन रे सब बेले एफिशिएंसी केते रहिबो. The efficiency of a power transfer under maximum power transfer condition. T max जते बड़े maximum power transfer करिवो फार्मूला कोन BTH रो स्क्वायर बाय 4RTH. Efficiency 50%. Question number 69. Which of the following best describe the implication of a low utilization factor in a system design? एमानक मध्यरु बेस्ट इम्प्लीफिकेशन कोटा यूटिलाइजेशन फैक्टर. एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 देयर इज सिग्निफिकेंट अनयूज्ड इंस्टॉल कैपेसिटी लीडिंग टू पोरेस्ट एसेट यूटिलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 70. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉर्टन्स थ्योरम इज नॉट ट्रू? एमानक मध्यरु नॉर्टन्स थ्योरम पाई को स्टेटमेंट ट्रू नुह. एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 नॉर्टन्स एंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट कैन नॉट बी कन्वर्स. कोन कहिला नॉर्टन थ्योरम आ थेवेनिन्स थ्योरम कन्वर्स करिवो से देछि कैन नॉट कन्वर्स माने कन्वर्ट करि परिबो कन्वर्ट हेइ परिबो. ए जो क्वेश्चन नंबर 66 रु 70 भितरे जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चार्ट सेक्शन में यस लेखो सर क्लियर हो. क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन नंबर 71. टू रेंडर each earth with their terminal viscosity, the ratio 9:4, the ratio of their radius. दिजन जाक स्क्वायर रूट नै जाओ. एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 3:2 रेंडर ऑफ रेशियो टा को स्क्वायर रूट नै. क्वेश्चन नंबर 72. The number of mesh equation required to solve planar circuit is equal to. गोटे प्लानर सर्किट रे नंबर ऑफ मेश इक्वेशन केतेटा रहिबो? एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेश. गोटे प्लानर सर्किट रे नंबर ऑफ मेश केतेटा रहिबो ना इंडिपेंडेंट मेश केतेटा. क्वेश्चन नंबर 73. हाउ आर field coil of a synchronous motor is excited? गोटे synchronous motor रो field coil को आमे कहा द्वारा excite करूची? गोटे synchronous motor रो field coil को आमे कहा द्वारा excite करूची? एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर 2 सर बाय यूजिंग डीसी सोर्स बा डीसी जनरेटर द्वारा आमे सिंक्रोनस मोटर रो फील्ड कॉइल टा को सर एक्साइट करूची. क्वेश्चन नंबर 74. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम विस्कोसिटी? सर एमानक मध्यरु कहारो सबुठारो मैक्सिमम विस्कोसिटी रुहे? एमानक मध्यरु को मटेरियल अधिक विस्कोसिटी रुहे? एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 ग्लिसरीन रो हमर कोन अधिक परिमाण रो विस्कोसिटी थाए. क्वेश्चन नंबर 75. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए प्रोटेक्टिव रिले इन द पावर ग्रिड? सर गोटे पावर ग्रिड मानक रे हमर जो प्रोटेक्टिव रिले लागुची तार प्राइमरी पर्पस कोन कोन पाई आमे प्रोटेक्टिव रिले को व्यवहार करूची? एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6 कोन टू डिटेक्ट द आइसोलेट फॉल्ट को डिटेक्ट करबा आइसोलेट करबा पाई हमें कोन रिले व्यवहार करूछ. ई जो क्वेश्चन नंबर 71 रु 75 भितरे
जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हो समस्ते चैट सेक्शन में एस लिख वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 76 which of the following material has highest band gap एमानक मध्यरु सर को मटेरियल एनर्जी बैंड गैप सबुठारु अधिक अछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सर डायमंड रो सबुठारु कोन ना एनर्जी गैप टा बैंड गैप टा अधिक अछि क्वेश्चन नंबर 77 why is the starting torque of a squirrel cage induction motor generally low सर गोटे स्क्वारियल केज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क टा लो थाए कारण कोन कोन पाई गोटे स्क्वारियल केज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क लो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 because rotor current lag the rotor EMF significantly क्वेश्चन नंबर 78 at absolute zero temperature the Fermi direct distribution becomes absolute zero temperature रे Fermi direct distribution becomes excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स्टेप फंक्शन Fermi direct का सहित रिलेट करूची ना स्टेप फंक्शन सहित क्वेश्चन नंबर 79 which of the following statement एमानक मध्यरु false statement माने भूल अछि regarding charge neutrality of a semiconductor excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 an excessive electron overload n type semiconductor violet charge neutrality n type semiconductor excessive कोन इलेक्ट्रॉन रहइबो होल नै एटी होल दे दिछि एटी कोन हबो इलेक्ट्रॉन हबो N type semiconductor रे majority charge carrier hole रुहे P type semiconductor रे majority charge electron रुहे question number 80 what is the main effect of field failure in alternator सर एमानक मध्यरु गोटे अल्टरनेटर जो फील्ड टा फेल्योर होची मेन इफेक्ट कोन पाई गोटे अल्टरनेटर फील्ड टा सर फेल्योर हे excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इट कॉजेस अल्टरनेटर ऑपरेट इन इंडक्शन यदि फील्ड टा फेल्योर हे गला गोटे अल्टरनेटर टा सारे बिहेव करिवो कोन इंडक्शन एथि सहित तमानकर मॉक टेस्ट 3 कंप्लीट सॉल्यूशन करि देली तमानको जो माने अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी नथिला से माने जानि परिलो ये जो क्वेश्चन 80 टा डिस्कशन कली कि केतेटा क्वेश्चन परफेक्ट भाबरे करि परिला समस्त मते चैट सेक्शन मेसेज कर सर मु एतेटा क्वेश्चंस करि परिलो ये केतेटा स्कोर बना वेरी गुड 65 58 जेतिकिटा मॉक टेस्ट देइची तमर प्रथम काम होची मॉक टेस्ट जेतिकिटा देइची 12टा कि 11टा 10टा सब तक कंप्लीट करिवो वन शॉट कंप्लीट करिवो रिवीजन पारुची जति करिवो बुझी पारुछ ना तापरे काली 2-4टा मॉक टेस्ट भाबुची देइ देबी प्रैक्टिस करिकि समस्त करि दबो सेकंड दिन काली मे भी तमर ड्यूटी अछि मु क्लास करि पारे न करि पारे बुझी पारुछ ना गोटे दिन तुम रिवीजन कर समस्त को एग्जाम पाई ऑल द बेस्ट भलो स्कोर करिवो भलो कंटेंट देइची जी सबुतक जिंस को मु कहिबा अनुसार फॉलो करिची भलो भावरे करिची 100% एग्जाम देकी मते कोन निश्चिंत मन पकेबो कारण मो टारगेट तुमको 80 रु 90 भीतर टारगेट रखिथिली मो तुमको 90 भीतर सफिशिएंट कंटेंट मो तरफ जेति हबो समस्त को ऑल द बेस्ट भलो रे एग्जाम दियो एवं कोन जी जहाँ परिश्रम करी से परिश्रम अनुसार से फल पाओ भगवान को एतिके प्रार्थना करूची रहुची जय जगन्नाथ।